Turnover or activity are the terms which are used for business operations and the speed of business operations. That is, the turnover refers to how quickly we turn our receivables into cash and how quickly we convert our inventory into cash and how quickly our payables are also converted into cash. So, turnover refers to the movement of our current assets. जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा, जितनी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतना बिजनेस फ्लॉरिश करेगा, उतना प्रॉफिट बढ़ेगा. So we would always like to have a high turnover in our receivables and also in our inventory. Turnover generally is calculated as times of a particular value. That is, कितनी मर्तबा हमने receivables को turnover किया, कितनी दफ़ा हमने receivables को कैश में कन्वर्ट किया. So how many times there was receivable turnover or payables turnover or asset turnover. The turnover ratios or activity ratios are also calculated as number of days. So we can also calculate a turnover ratio in times and also in number of days. Both the ratios are basically the same, but there are different angles of looking at the same thing. यानी अगर टर्नओवर इन टाइम्स ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ डेज कम होते चले जाएंगे, और अगर टर्नओवर इन टाइम्स कम होगा तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो जाएंगे. बेसिकली वी कैन से दैट अ टर्नओवर or an activity shows that in how many days a certain amount is converted into cash. This is also something that shows our cash flows and our liquidity along with the activity of the business. टर्नओवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सेल्स करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास रिसीवेबल्स आते हैं और ये सेल्स हमारे रेवेन्यू या प्रॉफिट का हिस्सा बन जाती है. लेकिन अगर ये रिसीवेबल्स कभी भी हमें पैसा ना दें, कैश ना दें, तो वो प्रॉफिट, वो सेल्स या रेवेन्यू जो हमें रिकॉर्ड होके नज़र आ रहा है, कभी भी रियलाइज नहीं होगा. सो इट इज़ नॉट just important that we generate some revenue or sales, but it is equally important that we collect cash from those revenues and sales that we have generated. इसका मतलब है कि अगर रिसीवेबल से पैसा टाइम पर रिसीव नहीं किया जा रहा, it is something negative for a business organization, because longer it takes, it is not useful or better for the organization and the profits will be cut. जितनी जल्दी इन्वेंट्री का टर्नओवर होगा, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री को हम कितनी तेज़ी से कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं. हमने कुछ खरीदा, खरीदने के बाद उसको बेच दिया और प्रॉफिट हासिल किया. सो टर्नओवर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन अ बिजनेस एंड वी वुड ऑलवेज लाइक टू हैव हायर एक्टिविटी. हम इन रेशोज को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं? हाउ डू वी बेंचमार्क दीज टर्नओवर रेशोज? It is not easy to set a common benchmark for all the activity ratios because of the reason that the nature of business and the industry's average are two things which are to be considered while setting some benchmarks. To calculate these ratios, that is receivables turnover and inventory turnover and other turnover ratios, we make use of both the financial statements, that is balance sheet and profit and loss account, यानी statement of financial position and statement of comprehensive income. इन दोनों स्टेटमेंट से ही हम डेटा लेकर अपनी एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करते हैं. ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? एक्टिविटी रेशोज या टर्नओवर रेशोज सबसे ज़्यादा किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? Certainly these ratios are important for the management of the company. The people who are actually running the show, जो लोग इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनके लिए अहम है कि ये एक्टिविटी रेशोज जो हैं वो विद इन द लिमिट्स रहें या एक सर्टन लेवल से बेहतर रहें, ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रिफ्लेक्ट होती रहे. जो 4 टर्नओवर रेशोज हम डिस्कस करेंगे अपने इन मॉड्यूल्स में इन डिटेल, these are
receivables turnover ratio, inventory turnover ratio, payables turnover ratio and asset turnover ratio. पहली तीन रेशोज जो हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड हैं. यानी receivables turnover ratio simply means that in how many days the receivables are converted into cash. कितने अरसे में हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल हमें पैसा दे देते हैं, यानी कितना क्रेडिट पीरियड हम अपने कस्टमर्स को अलाउ करते हैं. एंड वी वुड लाइक इट टू बी द मिनिमम टू improve the liquidity and profitability. Inventory turnover is also a ratio which shows that for how many days or how long we hold our inventory in our business. Keeping inventory is essential. It is very important because without keeping inventories, no business is possible. But having inventories more than our requirement certainly hinders the performance of a business organization. यानी इन्वेंट्री अपने हद से बढ़ जाए तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों के लिहाज से हार्मफुल होती है. सो वीड लाइक टू हैव अ सर्टन inventory turnover that is profitable and that is most suitable for a business organization. On the other hand, payable is the other side of it, that in how many days we actually make the payment. जैसे हम रिसीवेबल्स को चाहते हैं कि हमें जल्द पेमेंट करें, इसी तरह हमारे क्रेडिटर्स भी चाहते हैं कि हम जल्द पेमेंट करें. बट वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल when it comes to the payables turnover. So we would like to have a longer payment period. यानी हम ये पसंद करेंगे कि पेमेंट पीरियड को बढ़ा दिया जाए. So payables turnover ratio generally has to be better if it is higher. अगर payable turnover slow है तो हम ज़्यादा दिन के लिए लोगों का पैसा यूज़ कर रहे हैं and it is considered suitable for a business organization. And the last one is asset turnover. This is a ratio which relates our revenue or our sales with our total investment or our total assets. And it simply shows that how effectively we are utilizing our assets to generate our revenues or sales. With a given value of asset or total investment, the maximum revenue we generate will be the best for the organization. So, higher is the asset turnover ratio, better it is for the business organization. So, we'll talk about these ratios in detail one by one in our later modules.